Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Suramya Kaushik. It's the big match day, Australia versus South Africa. Well, what a start by the South African side. Quinton de Kock, it seems that he has put all his IPL experience with the Lucknow side here in Lucknow. Let's hear it out from Jamie Alter, Dharmendra Singh, and Chetan Narula, what they have to say about the whole match so far. Hi, gentlemen. Jamie, it seems that South African team has come up with a very different mindset in this World Cup. Absolutely. This is a very, very good batting attack because you've seen, like, since I think the biggest thing is personally in regards to South African teams, I think they've apart from making the right selection, one very good thing they did was to remove the captaincy from Aiden Markram. I think the best of South African players जब वर्ल्ड कप्स के बारे में बात करें they often get bogged down, and we saw कि 2018 में he was about 24 years old. They gave him the captaincy and immediately Dhoni's team went and smashed them 6-1 in South Africa, जो कि उससे पहले कभी इंडियन टीम ने नहीं किया था. So I think they've learned by mistakes, not just World Cups या Champions Trophy. They've learned from mistakes. Let's not automatically give our best player the captaincy. I think Temba Bavuma, who perhaps, well, not perhaps, he is not one of their top players. Unko captaincy dekar, they've let Quinton de Kock play freely. They've let Aiden Markram play freely. And surprisingly, what they've actually got, halanke इस वर्ल्ड कप में नहीं चले बवुमा, पर इनके आंकड़े देखे इस साल he's got outstanding one-day numbers. So despite in the past having, Cronjes and Jonty Rhodes and Kirstens and De Villiers and Fafs and Jack Callis, I think this is the best top six from a South African perspective. Diggaj legend koi nahi hai. They're all very good players who've been unburdened by leadership, and I think it'll probably stand them in good stead. But I still think they've actually blown it. They should have scored 350 on this track. So full marks to Australia for bringing them down, and I think they're going to struggle to get to 320. So just to say, Yeah. I'm not writing off Australia, and I will always hold my judgment on South Africa until the knockouts. क्योंकि इस टीम की फितरत है कि वो कहीं ना कहीं कांड कर देंगे, and I think we're seeing the first signs in today's match. I think before the match we were just talking about the South African side और हम यही बात कर रहे थे कि हम कुछ कह नहीं सकते because they choke. और आज के Yeah. मैच में देखना होगा कि किस तरह से साउथ अफ्रीका खेलेगी ऑस्ट्रेलिया को. But Chetan, at one point it seemed that it's South Africa's day today because the way Quinton de Kock was playing and then Markram came. But Australia made a good comeback. You think that now Australia have a decent role to play ahead and then win this match? Absolutely. I think they have pulled it back really well. What they have done is they have taken wickets in a very, very right stage, in a very, very timely manner. मतलब आपका जो last के जो 10 overs हैं, जब मार्करम और Henrik Larsson batting कर रहे थे, तो कुछ around 12 overs बचे हुए थे, and they were looking at going at last 12 overs में they could have easily got 100 runs. In fact, I think 41st over के बाद जो भी विकेट्स गिरने शुरू हुए हैं, that have hurt South Africa a lot. Quinton de Kock को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेम करूंगा. Fantastic 100 once again. Yep. वो इस टूर्नामेंट के बाद रिटायर हो जाएंगे, but I think he's in the form of his life, really. Yeah. But what I would like to say is that was an unnecessary shot that he played, क्योंकि उस शॉट की वजह से first of all उस शॉट की जरूरत नहीं थी उस शॉट को खेलने की, because उस टाइम पे काफी सारे ओवर बचे हुए थे. आई थिंक अभी 18 या 19 ओवर बचे हुए थे, एंड ही कुड हैव इजीली गॉटन, आई एम नॉट सेइंग ही कुड हैव गॉटन डबल 100, क्योंकि उसके लिए एक अलग तरीके का टेम्परामेंट चाहिए होता है जो शायद क्विंटन डे कॉक के पास है नहीं. ही इज मोर ऑन द ईशान किशन साइड दैन शुभमन गिल और रोहित शर्मा साइड. सो आई थिंक he should not have played that shot. He should have tried to go for 150 and all. वो कोशिश कर रहे थे पिछले मैच में, वो 100 बना के आउट हो गए, अगली बॉल पे आउट हो गए. आज वो 100 बनाने के बाद he was trying to rotate the strike, he was trying to play defensively. Maxwell was bowling a really good spell. होता है ना, पेशेंस खत्म हो जाती है. 3 बॉलें आपने डॉट खेल ली, फिर आपको लगा कि यार मैं कुछ करता हूँ डिफरेंट. कोई बात नहीं, 3 बॉलें डॉट गई, एक फोर्थ भी डॉट चली जाएगी, कोई बात नहीं. उसके बाद 18 ओवर पड़े. So what he did was he tried for a reverse sweep, और वो पता नहीं किसी तरीके से उनकी स्टंप्स पे चली गई. So
lack of patience from Quinton de Kock has hurt South Africa. Markram has played an amazing knock. I agree with Jamie. He is tournament में they haven't given him the captaincy, but I think he's the future captain in waiting for South Africa again. 2018 में जो हुआ था, I'm not sure उसको मैं इतना count करूंगा because he was very young उस time पे, and you know there was Faf was injured, Faf was out, so they Yeah. wanted somebody to lead. They were trying to groom someone, but there is no doubt in my head. मैं एडन मार्करम को 17 साल की उम्र से खेलता हुआ देखते आ रहा हूँ, and he has always had leadership qualities, and I think he is South Africa's future captain, long-term future captain. That was a very raw age. Now it's 5 years down the line. He's a much more mature batsman. और वो उनकी बैटिंग से अब दिखना शुरू हो गया है. So yeah, but overall coming to the score, 297 for 5. अभी हम बात कर रहे हैं 2 ओवर बचे हैं, तो if Australia can manage to hold them to 320, they would have done an exceptional job. Yeah, and I believe David Miller will have to do something really, really good out there in the next 2 overs so that South Africa push to 320 plus. But Dharmendra, tell us, how did you find South Africa's performance? I believe Jamie or Chetan ने तो काफी अच्छी तरह से बताया, especially the way Chetan, talked about that shot from Quinton de Kock. But apart from Quinton de Kock, let's talk about the captain himself. Let's talk about Temba Bavuma. Is not performed well of late. So is that something very concerning for the team? नो आई डोंट थिंक सो. एक्चुअली आप सुरभ में इस मैच को भी अगर आप देखें तो आई एम श्योर कि साउथ अफ्रीका मस्ट बी डिसअपॉइंटेड विद दिस स्कोर. अब जैसा मुझे भी लग रहा है कि 320 325 मैक्सिमम यहाँ से जाना चाहिए. वैसे वैसे तो अभी है आपके बिग हिटर हैं दोनों, डेविड मिलर और लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा था जिस तरह से स्टार्ट मिला था साउथ अफ्रीका को, वो लग रहा कि 350 कम से कम बनेगा. और ये विकेट जो है, जैसा हम समझ रहे थे, विकेट में ऐसा कुछ है नहीं. और अभी जिस तरह से अगर यहाँ पर ड्यू अगर थोड़ा अगर वो आएगा, अगर उससे उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग थोड़ा ज़्यादा आसान हो. लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगा, आप रिजल्ट मैं नहीं जानता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अभी कहना बहुत मुश्किल है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से कमबैक किया है और उसको रोका है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से चाहेगी कि वो चेस करे. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि उनके लिए डू और डाई मैच है, तो उनको यहाँ पे मैच जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन इसके अलावा बिल्कुल. सुरम्य, एक चीज़ अगर मैं जो सबसे बड़ा जो नोटिस कर रहा था, अगर आप बॉडी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलियन कम से कम शुरुआत में आप देखिए, जो बॉडी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलियन टीम की थी ना, वो मुझे थोड़ा सा वो बहुत ही वो ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है कभी ऐसे दिखते नहीं है. हमेशा वो उस तरह का जो आईसीसी टूर्नामेंट में जिस तरह से खेलते थे, वो डोमिनेंट होकर के, जो उनका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, इस बार समहाउ दे आर मिसिंग दैट स्पिरिट. सो आई डोंट नो क्या है, क्या मसला क्या है उनके अंदर, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता. लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम का परफॉर्मेंस जिस तरह से हो रही है, अगर देखिए ऐसा नहीं है कि 325 या 330 का भी स्कोर बनता है तो उसको चेज करना बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं है. लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया टीम अगर सपोज किसी भी तरह से मैच अगर कहीं अगर ये हार जाती है, तो जैसे पहले भी मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से मैं जिस तरह से टीम का बॉडी लैंग्वेज जो दिख रहा है, जो परफॉर्मेंसेज दिख रहे हैं, वो कहीं से भी अप टू मार्क नहीं कर सकते उसको, कम से कम जो पहले 2 मैच में दिखे हैं. देखिए इंग्लैंड भी पहला मैच हारा, लेकिन उसे बहुत शानदार तरीके से वापसी की. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जिस तरह से वो इनके फील्डर कैचेज छोड़ रहे हैं, मतलब फील्डिंग का भी मतलब क्लूलेस कई बार तो मुझे लगा स्टार्टिंग में कि स्टार्क ने अभी कैच छोड़ा, मिचेल स्टार्क हाँ. ड्रॉप्ड मिलर, तो इसी another drop. Stoinis this time. इस ओवर में मैं वही कह रहा हूँ, जो आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल वही हो रहा है. इस ओवर में जहां डॉट बॉल था, वहां मैक्सवेल ने, इनके बेस्ट फील्डर ने 2 रन दिए. अब 2 कैच छूटे हैं, एंड द थर्ड बॉल वाज द टॉप एज. मतलब लक भी इनका साथ नहीं दे रहे, और जो चांसेस आ रहे हैं वो नहीं दे रहे. इट इज अ वेरी अन ऑस्ट्रेलियन जो हमने 2 मैच में देखे हैं, वेरी अन ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस. बट क्योंकि इनसे ज्यादा कोई भी वर्ल्ड कप विनर्स नहीं है, आई एम गोइंग टू से, जब तक इनका आखिरी मैच ना हो, इनको राइट ऑफ मत करो. ये इनके डीएनए में कुछ और है. बिल्कुल. और मैं पहले ही बोल रही थी कि we'll have to watch out David Miller. David Miller has smashed a 6 now, so a lot of things depend on him now. South Africa का क्या स्कोर होगा at the end of this first innings, वो देखना होगा, and a lot will depend on David Miller. लेकिन जेमी, यहाँ पर बात चल रही है मेंटल स्टेट की, यहाँ पर बात चल रही है माइंडसेट की. Before this match, Mitchell Stark clearly mentioned, he said that all of these games for us are a test of our mindset, because we have been coming from all the losses, against South Africa, against India. In the first match of this tournament as well, they lost to India.
Australia. So it's about how easily and how quickly we adapt to the conditions, and how easily we gear up for another match and don't think about the results. But as धर्मेंद्र mentioned, आई बिलीव कि वो साफ नजर आ रहा है. वो आप जब कॉन्फिडेंट नहीं होते हो ना 100%, वैसा सा परफॉर्मेंस लग रहा है. और आपने अभी बताया किस तरीके से ये ओवर गया है. सो डू यू थिंक दैट it's not about the skills? Obviously they have got really good batters and bowlers, but it's about the mindset, it's about the adaptability to the conditions. That's the reason that Australian team is lacking right now. Yeah, I mean, I स्टेटमेंट मेक सेंस, पर ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा किसी भी विदेशी टीम की आईपीएल में वो नहीं है ना, तो आई एम सरप्राइज. चलिए, मिचेल स्टार्क 6 साल से आईपीएल नहीं खेले, बट डेविड वार्नर, ही इज कैप्टन आईपीएल टीम, यू नो, स्टीवन स्मिथ इज कैप्टन आईपीएल टीम्स, ग्लेन मैक्सवेल हैज बीन ऑन द आईपीएल फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो आई एम नॉट श्योर व्हाट ही मींस. इट सीम्स लाइक अ बिट ऑफ अ सॉफ्ट एक्सक्यूज कि हमारे पास वो नहीं है. हाँ, चलिए, आपकी टीम शायद ठीक नहीं है. आई मीन, this is Steven Smith's last World Cup. He's not been a terrific one-day player as compared to Test cricket. David Warner का ये आखिरी World Cup है. Glenn Maxwell क्या 4 महीने बाद आ रहे हैं. Stark भी मेरे ख्याल से 4 महीने बाद आ रहे हैं. Marcus Stoinis has been injured, so it's not the strongest Australian teams. चलिए, विकेट भी गिर गया. It's not the strongest Australian team that's ever gone into a World Cup. But for him to say कि you know we have to test ourselves in the conditions. हाँ, अगर आप 2 साल बाद यहाँ पे आ रहे होंगे, I would have said ठीक है. अभी तो मार्च में तुम यहाँ पे सीरीज जीते हो, तुम्हारे आधे प्लेयर्स तो आईपीएल खेले हैं, तो तुमने यहाँ पे एक टेस्ट मैच खेला. सो आई एम नॉट गोना रीड टू मच. आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस फालतू स्टेटमेंट्स दैट प्लेयर्स समटाइम गिव. वी ऑल नो कि इनकी काबिलियत क्या है. चलिए, वार्नर ने कैच लिया, ये बहुत बड़ी बात है. सी कैच यहाँ पर हो गया है, एंड 310 for 6. South Africa are 310 for 6. Let's see what will be the final score of the South African side. लेकिन चेतन, अभी जिमी जो बात कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स काफी यहाँ पर खेलते हैं. I think these are the same Australian players who were saying a few days back, you know, that we play in India more than Australia. So we know the conditions here quite well, and now they're saying, you know, it's about how to adapt to the condition. It's more about the mental setup. It's more about the mindset. Don't you think so that it's kind of contradictory, and it's kind of you know, opposite to their own statements? It's an interesting point what you say. It's contradictory, but is it really contradictory? I mean, yes, they play 10 months a year over here or 8 months a year over here. और पिछले 10 सालों में, yes, they have played a lot of cricket over here, but let's see, they have played here as individuals. Let's be honest about it, right? They played here as individuals. Now we are talking about a team that needs to collectively perform. You know, you have to become the sum of your parts. Individuals को इकट्ठे perform करना है, और यहाँ पे जो जेमी ने कहा है वो बिल्कुल सही है. Look at your individual players. Pat Cummins is a great IPL player. David Warner is a great IPL player. Cameron Green is a great IPL player, लेकिन उन्होंने अभी तक एक सीजन खेला है. Glenn Maxwell, is Glenn Maxwell a great IPL player? No, not to my mind. RCB fans कुछ भी कहते हैं, but he's never done anything of note. Maybe एक सीजन, और उस सीजन भी Kings 11 पंजाब को उन्होंने टाइटल नहीं जिताया. RCB के लिए भी उन्होंने इतना कुछ अभी तक किया नहीं है खास, ठीक है. वो एक हवा अलग बना हुआ है Glenn Maxwell, but he's not done too much, right? Mitchell Stark खेलते नहीं है. Josh Hazelwood has done wonders with CSK, but look at the way Dhoni has used Josh Hazelwood. चेन्नई में नहीं खेलते हैं, चेन्नई के बाहर जब टीम जाती है तब वो खेलते हैं. So उससे क्या पता चलता है कि these Australian players, very few of them, Mitchell Marsh, he's coming out to be a good player for DC, but has he consistently played for DC? आधा टाइम तो वो injured रहे हैं. So स्टीव स्मिथ आईपीएल में खेलते हैं क्योंकि रिकी पॉन्टिंग कोच हैं, वो जहां जाते हैं वहां पे स्टीव स्मिथ को कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं. मानस लाबुशेन को कोई लेता नहीं है. मानस लाबुशेन इज नॉट इवन अ गुड वन डे प्लेयर. द ओनली मार्कस स्टोइनिस, ऑब्वियसली मार्कस स्टोइनिस इज अ ब्रिलियंट आईपीएल प्लेयर. सो गिनती के हमने 5 प्लेयर गिनाए हैं आउट ऑफ 11 हु आर एक्चुअली ग्रेट. एडम जैम्पा कुड बी अ ग्रेट आईपीएल प्लेयर, बट उनको कोई लेता नहीं है क्योंकि आपके स्पिन बॉलिंग के कोटास जो हैं वो वैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं. सो मोर विकेट डाउन, या. सो माय पॉइंट इज कि individually, and this time Miller a big wicket. He will go. Individually they are great as individuals. You know, the individual player अलग-अलग टीम में खेलते हैं, वहां पे आपकी टीम बन रही है, लेकिन when they come together, are they gelling as a team at the moment? Warner last international, last World Cup.
Steve Yeah. Smith, last World Cup. Marnus Labuschagne, he should not even be playing ODI cricket. He's not an ODI cricketer. Marnus Labuschagne आज तक convincing नहीं लगे हैं मुझे as an ODI cricketer. Glenn Maxwell, highly inconsistent. Toynes still trying to find his feet. क्योंकि वो ऑलराउंडर उसी रोल में आते हैं. Cameron Green trying to find his feet. Alex Perry, उनका नाम ही मत लो. अब आपके पास बच गए केवल bowlers. And now the first game they played was in Chennai, जहाँ पे आपका bowling attack ही उसके हिसाब से नहीं है. Today again Yeah. they are playing. अब आप अगर इस पिच को देखो ना, the condition, the ball is stopping a bit. Yeah. अगर आप इनिशियली अगर कंपेयर करोगे जब क्विंटन डिकॉक खेल रहे थे when the ball was new, both the balls were new. Now 25 overs old. It was coming really well on to the bat. In the second half of the innings, it has started stopping a bit. वो एकदम से बल्ले पर नहीं आ रही है. So my point Yeah. is कि the conditions are very different from the kind of bowling attack that they have brought. And ideally, you would not expect Australia to have a different bowling attack than this. इसका मतलब यही है कि this bowling attack is not good enough for these sort of pitches. अब सवाल ये है कि would it be good enough for Delhi type pitches, Dharamshala type pitches, Mumbai type pitches, Bangalore type pitches? Maybe. But जहां पे बॉल रुक रही है वहां पे they are not good enough seemingly. Although I would still say कि यहाँ पे 320 पे रोकना, तो 20 से पहले रोकना is a very very good thing for Australia. Whether they can Yeah. chase 320 or not, that's a totally different story. Totally different debate. Yeah. At the Yeah. moment, it does not look like that Australia has the bowling attack for conditions where the ball is turning a bit, stopping a bit, and they surely do not have the batting for it. No, this is so a fact. I could hear someone singing somewhere. Yeah. So I was just talking about, I think someone singing for Australia's win today, because that's what they must be thinking and wishing for. But yeah, JP, we were talking about, this match, and मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन टीम अभी तो बहुत खुश होगी जिस तरीके से इन्होंने साउथ अफ्रीका को इतने से स्कोर पर रोका है. आप एक पॉइंट पे 350 भी सोच रहे थे, बट ये मैच शुरू होने से पहले बोला जा रहा था कि इट्स नॉट अ हाई स्कोरिंग पिच, यू विल गेट टू सी अ लो स्कोरिंग मैच. From that lens, do you think that 3-1-1 is a good score to put on this pitch? Look, had they got to 320, I would have said 320. जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, धर्मेंद्र also said 320 अच्छा स्कोर है. पर आप देखो यहाँ पे क्या हुआ. मिचेल स्टार्क जो इस ओवर से पहले थोड़े ऑफ लग रहे थे, बंदे ने एक रन दिया आखिरी ओवर में, राइट. This is why when it comes to the push and shove stage, I will always back an Australian team. I don't see any South African bowler, even Nokia, who can rock up after a terrible day, जहाँ पे कैचेस छोड़ रहे, आपने खुद कैच किया और आखिरी ओवर में एक रन देके 2 विकेट लिए, राइट. अब are you calling this South Africa's comeback, or is this South Africa choking in just their second World Cup match? I don't know. I think the jury will be out. I will say, actually, South Africa can go into the knockouts with 9 wins. इनकी फितरत में है कुछ करना. And the more Chetan was describing De Kock's shot, he will play the same shot in the semi-final, but the difference will be he won't have 107 runs to his name. He'll be on 65, 71. और जो ये लिख के लेना मुझसे आज, जो ये टीम कम्बस्ट करेगी ना, अगर ये वहां तक गए भी, we will all be looking back at this show saying, यार उस दिन तो हम कुछ और कहते. Because South Africa have a tendency to do it. और I'm saying, look at how Australia, right? The last over from Cummins, चौका छक्का मिसफील्ड 2 कैच, पर उनके पास वो एक्सपीरियंस है कि आखिरी ओवर में जहां 325 बन सकते थे, अब केवल 311 बने हैं. So yes, I think they will struggle in this chase. I think they'll do it because I don't trust South Africa's bowling, but write off Australia at your peril. Now, Chetan, 287 has been Australia's highest successful chase in World Cup. Today, the target is 312, 311 runs. That's what South Africa has made in 50 overs. Will it be a decent game for the Australian lineup to chase or not? I think it should be a decent target, I would say. I think अगर आप देखो तो it has changed. The way cricket has been played in India has changed.
312 is not that great a total. It just depends कि pitch किस तरीके से खेलेगी. जो मैं कहा था कि अगर ड्यू होती है तो इट्स गोइंग टू सपोर्ट द बैटिंग. स्पिन का इफेक्ट रिड्यूस हो सकता है. न्यू बॉल थोड़ा सा रहेगा लेकिन वो बाद में रिड्यूस होता जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बिकम कंड्यूसिव फॉर बैटिंग. इज दैट गोइंग टू हैपन? We have to wait and watch. If it happens, can Australia take advantage of that? We'll have to wait and watch. उनकी बैटिंग इस समय किसी तरीके के रिदम में नहीं है, किसी तरीके के फॉर्म में नहीं है, कॉन्फिडेंस में नहीं है. That is a major problem with Australian batting at the moment. और हमने कहा कि फर्स्ट इनिंग्स का जब 35 doing stop was stopping. It was stopping and coming. It was not coming very readily onto the bat. So that was a problem in the latter half of the innings. Agar Australian innings mein ye hoga, that means they'll have to do the bulk of scoring in the first 20, 25, 30 overs. Will they be able to do that? Anybody says. So look, this is chaseable. And Australia must chase this. Keep their World Cup alive to not, it's just the second match for Australia and we're talking about Australia trying to keep the World Cup alive. It's very, very weird. हम ये बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप अलाइव रखना है. Just the second match they are playing in this World Cup, which just goes to show to a great extent that this Australian team is perhaps not the best suited to these conditions. आप 96 की ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करो, they have two spinners. No, they Shane Warne. They had a bowlers who could bowl in these conditions. They had batsmen who could bat in these conditions, could take advantage of these conditions. और एक अकेला Shane Warne काफी होता था उस टाइम पे टीमों को नचाने के लिए. They don't have that one quality spinner. Adam Zampa is really good, but he hasn't got off to a great start in this World Cup. I mean, Glenn Maxwell is out bowling him today. So, look, like that, this is chaseable. Australia should chase it. होगा या नहीं, let's see. South Africa, उनकी weak side जो है वो bowling ही उनकी weak side है. So I still think it's a very, very even match. अगर मैं कहूँ तो 55-45 to South Africa at this point, just because they have those runs on the board. 55-45 to South Africa. They have got decent runs on the board, especially in Lucknow. धर्मेंद्र, आप बहुत स्टार्टिंग से ये बात बोल रहे हो कि आज स्कोर चाहे कुछ भी हो, ऑस्ट्रेलिया really need to be there with only one mindset that they have to win this match. By hope और crook कैसे भी करो बस ये मैच जीतो. और जैसे आपने हमसे मैच से पहले भी कहा था, मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ, I think everybody is saying the same thing that you said earlier, that Australia, this is a must-win match for you. You really need to win this match. Now, चेतन ने तो अपनी डिस्क्रिप्शन जो दी है उसमें उन्होंने बताया कि कि कैसे आप जीत सकते हो, कैसे नहीं जीत सकते हो, क्या होना चाहिए. बट डू यू थिंक चेस कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया या नहीं ये टोटल? देखिए शुरू में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिमी से के इस बात से मैं एग्री करता हूँ. देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम में दो बातें होती हैं, एक परफॉर्मेंस और जिस तरह का उनके अंदर ना एक कहते हैं स्पार्क भी होता है. ये आखिरी ओवर जो मिचेल स्टार्क का है ना, उनकी टीम में स्पार्क आ गया इससे. अब उनके पास इससे पहले लग रहा था, इस ओवर से पहले लग रहा था कि दे आर आउट ऑफ गेम. लेकिन जो लास्ट ओवर हुआ है ना, कई बार गेम में क्रिकेट एक ऐसा गेम है ना, एक ओवर या 2 ओवर का जो गेम है ना, वो साइकोलॉजिकली गेम का वो पलट देता है. मैं भी ये मानता हूँ कि जो आखिरी ओवर जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने की है और जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है. और जिस तरह का उनको, और एक बात मत भूलिए, जैसा जेमी ने भी कहा, मैं भी मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन एक ऐसी टीम फाइटर हैं, वो कभी भी वो उनमें एबिलिटी है. और अगर यहाँ पर एक बात और भी मैं बता दूँ श्रम्या, कि अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो अगले मैच से आप एक डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन टीम को देखोगे आप, क्योंकि उनको ना यहाँ से कहते हैं ना संजीवनी चाहिए, उनको एक लाइफलाइन चाहिए. और यहाँ से फिर 2 चीजें हो सकती हैं. जो अब तक हम साउथ अफ्रीका को मान के चल रहे थे कि साउथ अफ्रीका की टीम ने 400 कुछ रन बना दिए तो वो अनबिटेबल टीम हो गई, यहाँ से 2 चीजें एक डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगी. एक डायरेक्शन ये होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम कमबैक करेगी, और हम ये भी देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम जो अब तक लग रहा था, जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप और सारी चीजें, क्योंकि आज चोक किया उन्होंने, मैं भी मानता हूँ. देखिए 350 जहाँ बन सकता था वहाँ पर 311 रन बने हैं, 40 रन का फर्क. इसका मतलब ये है कि अभी भी किसी भी अच्छी टीम के सामने साउथ अफ्रीका की टीम चोक कर सकती है. चलो आपने श्रीलंका के खिलाफ 428-26 बना दिए, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप
अगर 40 रन कम बनाते हो और मैच हार जाते हो, तो यहाँ से इस पूरे टूर्नामेंट का डायरेक्शन टू डायमेंशनल ये मैं मान के चलता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया टीम कमबैक करेगी और शायद साउथ अफ्रीका टीम को आगे उनके लिए मुश्किल, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका को इंडिया से भी खेलना है, न्यूजीलैंड से भी खेलना है, इंग्लैंड से भी खेलना है, अच्छी टीमों से खेलना है उन्हें। तो ये गेम चेंजर Yeah. होगा ये मैच। इस मैच के नतीजे पे मेरी नज़र बनी रहेगी और मुझे भी लगता है कि मिचेल स्टार्क की आखिरी ओवर देखकर मेरे को ये थोड़ा लगने लगा है कि थोड़ा सा जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ अब झुकता हुआ दिखा है। लेकिन ये तभी होगा जब डेविड वार्नर इस मैच में अच्छे रन बनाएंगे। डेविड वार्नर से एक अच्छी पारी की उम्मीद, अगर वो अच्छा लंबा नहीं खेलते, अच्छा नहीं खेलते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ मिडिल में वो फिर से स्ट्रगल करेंगे। तो डेविड वार्नर को आज टिकना We भी need a पड़ेगा, good एक अच्छी start. पारी खेलनी पड़ेगी। Yeah. यस। Yeah, we need a good start, and let's see what happens in this match ahead. And it's so interesting that it's just the 10th match, and everybody is talking about whether Australia will stay alive in this tournament or not, and if South Africa will come with their choke kind of approach in this tournament or not. बहुत कुछ interesting discussions हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। अभी तो शुरुआत है, let's see क्या क्या होता है आगे, but आज देखना है क्या ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगी या नहीं। Let's see what happens in this match ahead. Thank you so much, gentlemen, for joining with me, and thank you so much, everyone, for joining with us in this match.